अपने 20s में हर कोई या तो अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश में लगा हुआ होता है या फिर एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में होता है। सही पकड़े हैं। I just dropped a truth bomb, right? Plot twist. आप ये दोनों ही चीजें करते हो लेकिन अलग अलग समय पर। Assuming कि इस समय आप एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में नहीं बल्कि अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश में लगे हुए हो, let me tell you about 5 amazing books that you must read at this confusing, exciting, tiring, and adventurous point of time. Now you must be thinking, those self-help books? Nah, I don't read those cheesy non-fiction self-helps. मुझे पता है और इसीलिए इनमें से कोई भी बुक ऐसी बोरिंग नहीं है जो चिल्ला चिल्ला के आपसे कहे यू कैन डू इट। रादर ये सारी बुक्स बहुत ही एक्शनेबल हैं और इनमें बहुत सारी रियल लाइफ एप्लीकेशंस हैं एंड नन ऑफ दीज बुक्स वुड बोर यू टू स्लीप। 5 books you must read in your 20s. Let's get into it. The first book is The Psychology of Money. मैंने सोचा पहली बुक फाइनेंशियल सब्जेक्ट पे रखते हैं because who doesn't love money, right? Unlike most of the other books centered around money, this one won't tell you how to be a millionaire, but will make you realize your relationship with money and will also tell you a bit about how to actually deal with those green papers. इस बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं। इनमें से पहले 19 चैप्टर्स में आपको अलग अलग तरीके पता चलेंगे जैसे लोग अपने पैसे को परसीव करते हैं और आखिरी चैप्टर में 20th चैप्टर में ऑथर ने बताया है कि वो खुद अपने पैसे को कैसे सेव करते हैं और कैसे इन्वेस्ट करते हैं। This book talks a lot about how we make our financial decisions for short term only. And when I think about it, it's actually true. मैंने भी पता नहीं कितनी बार अपने सेविंग्स वाले पैसे को यूज किया है just because I wanted something right then when I could have waited for the next payday instead. इसी वजह से मुझे इमरजेंसी फंड मेंटेन करने में बहुत दिक्कत होती है एंड आई एम श्योर आपको भी होती होगी। It's an easy read with simple and effective takeaways. You don't need much prior financial knowledge to understand and implement it. If you're just getting into investing and want to learn how to manage your money better, this book is your best bet. The second book is Super Thinking. Now, if I ask you which superpower you'd like to have, what would you pick and which superhero? Now, I know superpowers like flying, getting invisible, reading others' minds must be some of your answers, but as we know, you can't have them. Except for one. Can you guess? Is it super strength like Hulk? No, Bruce. It's super thinking. Now you must be wondering, how can thinking be a superpower? Let me elaborate. हमारे साथ जो भी होता है वो मोस्टली हमारे डिसीजन से गवर्न होता है, राइट? लेकिन हमें यही नहीं पता कि डिसीजन मेकिंग वर्क कैसे करती है। That's where mental models come in. A mental model tells you how something works and explains your thought process regarding it. तो अगर आपको एक बार ये पता चल जाए तो आपको पता चल जाएगा कि किस चीज से क्या ट्रिगर करता है and you'll be able to make better choices. This book is a fun and illustrated guide to every mental model you could possibly need to apply in your daily life. For example, मैं हमेशा से to do lists बनाता था लेकिन कभी भी उसमें लिखे सारे टास्क को मैं पूरा नहीं कर पाता था और मेरी समझ ही नहीं आता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। तो इस बुक में I came across something known as the Eisenhower Decision Matrix, जिससे मुझे पता चला कि मैं अपने टास्क को कायदे से प्रायोरिटाइज ही नहीं कर रहा हूं। In fact, it made a lot of other decisions easier as well. I'm sure it will help you in more ways than you normally expect it to. Knowledge कमाल है ना मेरा? Thank you. फिर भी कभी घमंड नहीं किया मैंने। But you know, all models and life hacks come with examples that make them interesting and easy to understand. So all that's left for you is to implement them. So if you're up to unlocking the superpower of your brain by using it to its full potential, give this one a read. The third book is Rework. 20s एक ऐसा दौर होता है जब हम अपने करियर्स को बिल्ड कर रहे होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम हम कुछ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो किसी जॉब में हो, बिजनेस में हो, अपनी स्किल्स पे हो या कुछ और। This book will totally change the way you look at all that work. This is neither a how to start your business book nor does it talk about productivity hacks. All it does is present some ideas that will totally contradict your current beliefs in the simplest way possible. For example, हमसे हमेशा ही कहा जाता है और मुझे भी ऐसा ही लगता था कि हमें अपनी मिस्टेक्स से सीखना चाहिए। Sounds fair, right? Not to the authors. ये लोग कहते हैं कि अपनी मिस्टेक्स से सीखना एक बहुत ही इनएफिशिएंट और लेंदी प्रोसेस है।
रादर हमें अपने सक्सेसेस से सीखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी दिन आपको पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है तो आप सोचो कि किसी एक प्रोडक्टिव डे में आप क्या करते हो जिससे आपकी पढ़ाई अच्छी होती है, rather than finding mistakes you're making right now. It literally blew my mind. And there are many more such unpopular ideas that the authors have personally tried and tested in their business base camp for over 2 decades now. तो अगर आप एक भी चैप्टर कायदे से पढ़ लो, it'll surely save you some time and effort someday. ये एक ऐसी बुक है जिससे आपको मन करेगा कि एक ही सिटिंग में पूरी कंप्लीट कर दें, because it's so fast paced and fun to read. And contrary to popular belief, this book is not only for entrepreneurs. It does talk a lot about business, but if you read it, there's a takeaway for everyone, no matter what you do. So grab it and get ready to reflect, unlearn, and relearn. The fourth book is The Defining Decade. As the name suggests, this book talks about your 20s. 20s. जिंदगी का सुनहरा वक्त. Anyway, you'll get a perspective of pretty much everything that people in this age group deal with. Education, career, relationship, personality, social networks, identity, etc. The writer, Dr. Meg Jay, has personally counseled a lot of young people like ourselves. So it's all based on that research, plus science, plus some interesting stories to make it a good read. ये कोई एवरेज सी सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जो आपको बताए कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए. I mean, we're told to become responsible while at the same time we're also supposed to have fun. And God knows the struggle of every one of us regarding those huge life decisions regarding job, moving out and family. ये बुक इन सभी चीजों को आसान बना देगी by showing you a pathway. एक चीज तो मैं श्योरिटी से कह सकता हूं कि you won't be lost or confused about your life ahead anymore. So if you want to make the most of your prime time, you've got to get into it. बस सर आप इतना बोल दिए छाती चौड़ा हो गया हमारा. Anyway, last but not the least, the fifth book is Show Your Work. Insecurity and self-doubt are two very common emotions that almost all of us have experienced when it comes to our work. अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो अगर मुझे भी अपना काम किसी को दिखाना होता है तो आई एम ऑलवेज वंडरिंग, इज इट गुड इनफ? जब लोग ये देखेंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? शायद मेरा काम परफेक्ट नहीं है तो जब कोई देखेगा तो इसका मजाक उड़ाएगा. इतनी रिलेटेबिलिटी मुझे आज तक नहीं हुई. इट्स दिस बुक that taught me why we should put our work out there for people to see even when it's not perfect. And I assure you, it'll do the same for you. It'll help you get over the fear of judgment, make you more confident, and also help you to self-promote. अक्सर हम लोग सेल्फ प्रमोशन के नाम से थोड़े से शर्मा जाते हैं या फिर हमें अजीब भी लगता है कई बार कि क्या यार मैं अपने आप को बेच रहा हूं. But once you read it, you know how important it is. I mean, obviously, who's going to know you're good at something unless you actually tell them? इसके अलावा ये बुक आपको ये भी सिखाएगी कि आप अपनी सोच में और अपने काम में ज्यादा क्रिएटिव कैसे हो सकते हो. This book has literally broken down the brainstorming process of the supposedly creative folks to tell you how they keep coming up with great ideas. The writer himself provides insights into his own brainstorming process, so you can see that creativity isn't just something some lucky few are born with. और बस यहीं तक था जो था. तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ. नहीं, अब तो सच में जाना ही पड़ेगा. All these books are short, concise and easy, so you have no reason not to read them now. But if you're an avid reader already, do tell me about more such must reads in the comments below. I'll go read something else till then. See you in the next one. Bye-bye.